Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to read the rule number 9 of pension rules. In the previous video, we have covered up to 8 rules. Now, we are starting from the ninth rule, right? So, here we begin. It says commercial employment after retirement. रिटायरमेंट के बाद जो है क्या आप कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स है वो बोलता है If a pensioner who immediately before his retirement was a member of a settled service group A wishes to accept any commercial employment before the expiry of 1 year from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the government to such acceptance by submitting a form application in the form F. That means अगर कोई भी person जो है अगर immediately after his retirement, before his retirement, okay, a person, if a pensioner who immediately for his retirement was a member of this Central Service Group A and he wishes to accept any commercial employment, okay, before the expiry of 1 year from the date of his retirement, he shall what should do, shall obtain previous sanction. क्या करना पड़ेगा? Previous sanction लेना पड़ेगा of the government to such acceptance by submitting an application in the form 1, provided that a government servant who was permitted by the government to take up a particular form of commercial employment during his leave, preparatory to retirement, or during refused leave shall not be required to obtain subsequent permission for his continuance in such employment after retirement. But जो है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज परमिटेड, ठीक है, वाज परमिटेड बाय द गवर्नमेंट, ओके, को परमिशन दे दिया गया टू टेक अप पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट कि आप ये वाला जो है कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो, ठीक है. So during his leave preparatory to retirement or during a refused leave, कौन सा बोला? लीव preparatory to retirement or refused leave, okay, shall not be required. So in that case also he shall not be required to obtain subsequent permission for his continuance in such employment after retirement. Now there is a word which says refused leave. Now, what do you mean by refused? Means secretary to government of India who has been granted a refused leave. Once leave is refused, no appeal is provided against the order refusing leave. Had to be granted refusing the leave. If it makes out of the leave, it can still be refused if there. Accordingly promoted as chief secretary. Yes. यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर that for during refused leave shall not be required to obtain.
In the case of refused leave, it could be granted under one circumstance which that a civil servant who had during the period once who has been granted refused leave from this was the petitioner was that the petitioner was promoted and posted to act as chief secretary to the government by CA Ramakrishna, who has been granted refused leave with effect from this. Attentively to the post of this will appear from the note signed by the petitioner himself on this. देखिए अब इसमें मिलेगा तो नहीं इस तरीके से इसके अंदर भी कहीं पर चलिए कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। मैं रिफ्यूज लीव का मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोवाइड दैट गवर्नमेंट सर्वेंट हु was permitted by the government to take up a particular form of commercial employment, ठीक है, during his leave preparatory to retirement or during refuse leave shall not be required to obtain subsequent permission, उनको लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर एक बार परमिशन मिल गई दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, और अगर एक साल से पहले बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट ही शैल ऑब्टेन प्रीवियस सैंक्शन। एक साल से अगर आप पहले ले रहे हैं बिफोर 1 ईयर, देन यस इन दैट केस आपको प्रीवियस सैंक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ government servant shall not negotiate for commercial employment during service without prior permission of the administrative department, and or such permission shall not be given unless there are special reasons for doing so, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको दे ही देंगे, ठीक है। तो प्रोवाइड फर्दर दैट गवर्नमेंट सर्वेंट जो शैल नॉट नेगोशिएट, उनको नेगोशिएट नहीं करना है फॉर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग सर्विस विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, एंड सच परमिशन शैल नॉट बी and such permission shall not be given unless there are special reasons for doing so, ठीक है। तो मतलब ये आपका राइट नहीं है, इट्स अप टू दी जो भी अथॉरिटी है उनके ऊपर डिपेंड करता है। बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 3, द सब रूल 3 जो नीचे दे रखा है, द गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इन राइटिंग ऑन एप्लीकेशन मेड अंडर सब रूल 1 बाय ए पेंशनर, क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट में जो है राइट they may grant necessary permission to pensioner to take up the commercial specified in the application of such country if any if they deem necessary, ठीक है। that means वो क्या कर सकते हैं अपने तरफ से, वो ग्रांट नेसेसरी परमिशन कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं परमिशन को टू सच पेंशनर टू टेक अप द कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन द ऑन द ऑर्डर, ठीक है, एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन ऑर्डर in granting or refusing 2 to a pension for taking up any commercial employment, the government shall regard to the following factors, namely whether a no objection for the proposed post-retirement commercial employment has been obtained from the controlling authority and from the office where the officer retired, वे इनको कंसीडर करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है, while granting or refusing करेंगे, ठीक है। a pension for taking the government shall have regard, okay, the government shall have regard to the following factors, क्या है कि उन्होंने कोई नो ऑब्जेक्शन जो है वो ले लिया है फॉर द प्रपोज पोस्ट रिटायरमेंट कमीशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, ठीक है, फ्रॉम द कार्टर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। दूसरा, वेदर द ऑफिसर हैज बीन
privy to sensitive or strategic information in the last 3 years of service? क्या अगर उनके पास कोई ऐसा has been privy to sensitive or strategic service information in the last 3 years of the service which directly relate to the area interest of work, uh, areas of interest or work of the organization which he proposes to join, or the area in which he proposes to actually practice or consult. अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, उसके उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट और या फिर वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो भी आपको चेक करना है, ठीक है, विच ही प्रपोज टू ज्वाइन, इन विच द he proposes to practice or consult, whether there is a conflict of interest between the policies of the office he has held in the last 3 years. क्या कोई conflict of interest है? The policy of office he has held in the last 3 years and the interest represented or work undertaken by the organization he proposes to join. For the purpose of this clause, conflict of interest shall not include normal economic competition with the government of or its undertaking. ठीक है, यहाँ पर जो है conflict of interest में है, उसको include नहीं करेंगे, किसको? It shall not include normal economic competition. ठीक है, तो बोलता है इसमें बोलता है whether the organization he proposed to join has been known to be in any way in conflict or prejudicial to government. क्या अगर वो कोई भी जो organization that he wishes to join, okay, कोई भी जो organization है he proposes to join has been known to be in any way a way of conflict or with the prejudicial to India's foreign relations, national security or domestic harmony, इस तरीके से है क्या? And whether the organization is taking any activity for intelligence gathering. दूसरा बोलता है whether service record of the office is clear. देखना आपका कि आपका जो service record है of the officer is clear, particularly with respect to integrity and dealing of the with the non-government organization. Whether proposed emoluments and pecuniary benefits, proposed emolument या फिर pecuniary benefit as far as in excess of those currently prevailing in the industry. ऐसा तो नहीं कि उनसे उनसे कुछ ज़्यादा दे रहे हैं आपको, ठीक है? So for the purpose of this clause, the words far in excess, far in excess का मतलब इन्होंने बताया that shall not be construed as to cover increase in such benefit as that may be, that may be as a result of buoyancy in the industry or in the economy. ठीक है, far in excess जो है it shall not be construed, ठीक है, as to cover increase in such benefit as may be a result of buoyancy. That should not be construed to cover increase in such benefit as a result of buoyancy in the industry, ठीक है, or in the economy as a whole. ठीक है, so the any other relevant factor which may be in the knowledge of the administrative minister but are not included in the criteria in this rule, or the matters of with specific instruction may be issued by Department of Personnel Training from time to time. ठीक है, DOPT जो है अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन इशू कर सकते हैं इस केस में, ठीक है, एनी द रेलिवेंट फैक्टर, ठीक है, relevant factor by the administrative ministry as well as but are not included in the criteria, the specific instruction may be issued by the specific instruction that can be issued by the DOPT. फिर बात करता है कि the application of pensioners for permission to accept commercial employment shall be considered in accordance with the TOBR, ठीक है, and the instruction by the government from time to time. ठीक है, तो ये जो भी है आपकी पेंशनर जो है for the permission to accept commercial, it shall be considered in accordance with the transaction of business rules 1961 and the instruction issued by the government from time to time, in order to ensure that all aspects related to the case have received proper attention. The administrative ministry or department shall maintain a checklist. ठीक है, एक चेकलिस्ट मेंटेन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बोलता है वेयर द पेंशनर इज नॉट डिस्क्वालिफाइड ऑन अकाउंट ऑफ एनी ऑफ द फैक्टर मेंशन इन क्लोज बी टू क्लोज जी, ठीक है जी, तो बोलता है द गवर्नमेंट में लिबरली ग्रांट परमिशन फॉर डायरेक्टरशिप ऑफ अ फर्म और कंसल्टेंसी प्रैक्टिस इन एरिया. अगर मान लीजिए कोई भी पेंशनर जो है नॉट डिस्क्वालिफाइड, ठीक है, फ्रॉम क्लोज बी टू क्लोज जी, क्या करना चाहिए? दे शुड लिबरली ग्रांट द परमिशन फॉर डायरेक्टरशिप ऑफ अ फर्म, कंसल्टेंसी और प्रैक्टिस इन प्रोफेशनल एरियाज, ठीक है, इन प्रोफेशनल एरियाज में जो है उनको अब लिबरली जो है अलाउ कर सकते हैं. क्या बोलते हैं? एक्टिवली एनकरेज पोस्ट सर्विस एम्प्लॉयमेंट इन सर्वे में साइंटिफिक literally cultural, social and artistic activity. Be liberal in granting permission for the post non government sector कोई भी है. Non distinguish between honorary and paid, not distinguish between honorary and paid or and self employment. तो
आपको डिस्टिंग्विश नहीं करना है बिटवीन दी ऑनररी एंड पेड एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। अगर कहीं पर भी ये क्लॉज बी से जी नहीं अप्लीकेबल होता, वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट ग्रांट्स द परमिशन अप्लाइड, जो कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ग्रांट्स द परमिशन अप्लाइड, वेयर द गवर्नमेंट जो है ग्रांट्स द परमिशन अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन और रिफ्यूज सच परमिशन, द एप्लीकेंट में विदिन 30 डेज ऑफ द रिसीव ऑफ द ऑर्डर टू दैट इफेक्ट मेक ए रिप्रेजेंटेशन। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 30 डेज के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट्स द परमिशन अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन और रिफ्यूज सच, अगर रिफ्यूज करता है सच परमिशन अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस, अगर कोई भी पता है कि भाई सब्जेक्ट टू दी कंडीशन, तो द एप्लीकेंट में विदिन कितना, विदिन 30 डेज, within 30 days of the receipt the order of the government to the effect to make a representation, make a representation against any such condition or refusal, and the government will make such order thereon as it deems fit, provided that no order, provided that no order other than an order cancelling such condition or granting such permission without any condition shall be made under this sub rule without giving the pensioner making the representative an opportunity to show cause against the order proposed to be made। कहता है कोई भी ऑर्डर, नो ऑर्डर अदर देन एन ऑर्डर कैंसिलिंग, सिर्फ एक ऑर्डर अलाउड है इसके अंदर, कौन सा, जिसमें आप कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर कैंसिलिंग सच कंडीशन और ग्रांटिंग सच परमिशन विदाउट एनी कंडीशन शैल बी मेड, कहता है कोई भी ऑर्डर, नो ऑर्डर and except that no order, that is no order other than order cancelling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub rule without giving the pensioner making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made। कोई भी जो ऑर्डर जिसमें आप कैंसिल कर रहे हैं या फिर जो परमिशन दे रहे हैं विदाउट एनी कंडीशन शैल बी मेड अंडर दिस सब रूल, ठीक है, अंडर दिस सब रूल विदाउट गिविंग द पेंशन मेकिंग दे, उनको कोई भी ऑर्डर जो है वो नहीं बनेगा, चाहे आप ऑर्डर पूरा दे रहे हो या फिर परमिशन जो है ग्रांट कर रहे हो, सच कंडीशन प्रोवाइड दैट नो ऑर्डर अदर देन एन ऑर्डर कैंसिलिंग सच कंडीशन, कैंसिलिंग सच कंडीशन कोई भी है, ठीक है, और ग्रांटिंग सच कंडीशन विदाउट एनी कंडीशंस, ओके, shall be made under this rule without giving the pensioner making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made, ठीक है। कोई भी जो ऑर्डर है अदर देन ऑर्डर, मतलब इसके अलावा, किसके अलावा, कोई भी ऑर्डर जो है अदर देन ऑर्डर कैंसिलिंग, या तो आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो तो सच कंडीशंस के लिए, ठीक है, और या फिर ग्रांटिंग सच परमिशन विदाउट एनी कंडीशन शैल बी मेड अंडर दिस सब रूल विदाउट गिविंग द पेंशन मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन टू शो कोज अगेंस्ट द ऑर्डर प्रपोज टू बी मेड, तो कोई भी ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। देखिए दोबारा बोलते हैं, सेवन, वेयर द जो गवर्नमेंट सर्वेंट है परमिशन अप्लाइड फॉर द सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस या फिर रिफ्यूज सच परमिशन, द एप्लीकेंट जो है 30 दिन के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, ठीक है। फिर बोलते हैं प्रोवाइड दैट नो ऑर्डर अदर देन एन ऑर्डर, तो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट मतलब इसके अलावा भी, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दिस के अलावा क्या कहता है, एक्सेप्ट दिस, कोई भी जो ऑर्डर है अदर देन, कौन सा, जिसमें आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो सच कंडीशन या फिर ग्रांटिंग सच परमिशन विदाउट एनी कंडीशन शैल बी मेड अंडर दिस सब रूल विदाउट गिविंग द पेंशन मेकिंग, कोई भी जो ऑर्डर है एक्सेप्ट दिस, नो ऑर्डर अदर देन, इसके अलावा कोई और दूसरा ऑर्डर नहीं होना जिसके अंदर आप ऑर्डर जो है कैंसिल कर रहे हैं सच कंडीशन या फिर ग्रांटिंग सच परमिशन विदाउट एनी कंडीशन शैल बी मेड अंडर दिस सब रूल विदाउट गिविंग द पेंशन मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रपोज अगेंस्ट द ऑर्डर प्रपोज, मतलब ये दो ही कंडीशन जिसके अंदर आप रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, वरना सब में आपको रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर आप सारी कंडीशन जो है कैंसिल कर रहे हैं या फिर परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। इफ एनी पेंशन 8th नंबर पर आते हैं हम आपका, इफ एनी पेंशनर takes up any commercial employment at any time before the expiry of 1 year from the date of retirement, if any कोई भी एक जो पेंशन ही टेक्स अप द एम्प्लॉयमेंट, तो वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट लेते हैं एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, विदाउट प्रायर परमिशन, कोई मान लीजिए विदाउट प्रायर परमिशन लेते हैं ऑफ द गवर्नमेंट और ब्रीच कमिट्स breach of any condition subject to which the permission to take up any commercial activity under to him under this rule, it shall be compulsory for the government to declare by order in writing, तो उस केस में क्या है,
गवर्नमेंट जो है कॉम्पिटेंट फॉर द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर बाय ऑर्डर इन राइटिंग एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड देयरइन ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड होल that he shall not be entitled to the whole or such part of the pension for such periods as may be specified in the order. वहाँ पर भी अगर आप विदाउट परमिशन लेते हैं या फिर कभी ब्रीच करते हैं कंडीशन की, तो आप क्या है इस पीरियड में ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अ होल और सच पार्ट ऑफ पेंशन to be specified provided that no such order shall be made without giving the pensioner concern an opportunity to showcase against such declaration. ठीक है, yes उनको जो है एक made without giving the pensioner concern an opportunity दी जाएगी उसमें of the show cause against such declaration. ठीक है, provided further that in making an order under this sub rule the government shall have regard of the following factors, namely the financial circumstances of the pension concern. उसमें डिपेंड करेगा कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल सर्कमस्टांस कैसे, द नेचर ऑफ द इमोल्यूमेंट्स फ्रॉम द कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट टेकन बाय द पेंशन कंसर्न. ठीक है, नेचर क्या है उनका इमोल्यूमेंट्स का, बोलते हैं एनी द रेलिवेंट फैक्टर. ठीक है, 9th नंबर बोलता है आपका एवरी ऑर्डर पास बाय गवर्नमेंट एंड शैल बी कम्युनिकेट टू द पेंशन कंसर्न. तो जो है आपको कम्युनिकेट करना है. ठीक है, कम्युनिकेट टू द पेंशन कंसर्न बोलता है. बोलता है द एक्सप्रेशन कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट मीन्स, यहाँ पर देख लेते क्या क्या है. An employment in capacity that of an agent under a company, cooperative society which is holding of an office, whether elective or otherwise, such as that of president, chairman, किसी का manager, secretary, treasurer, and like by whatever name called in such firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial, professional business, and includes also a directorship of such company and partnership of such firm, but does not include employment under a body, corporate, wholly or subsidiary by the central government. ठीक है, बट उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं है वो देख लीजिए. बट it does not include employment under a body corporate wholly or subsidiary controlled by the government or state government. ठीक है, तो यहाँ पर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट में फॉर एनी कैपेसिटी दैट एन एजेंट अंडर अ कंपनी. ठीक है, किसी भी कंपनी में, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, विच इंक्लूड्स होल्डिंग इन ऑफिस. कभी आप एज प्रेसिडेंट भी अगर जाते हैं, चेयरमैन भी, मैनेजर भी, सेक्रेटरी, ट्रेजरी. ठीक है, लाइक सोसाइटी फर्म और कोई भी फर्म हो गई आपकी, या फिर और इंडिविजुअल इंगेज्ड इन ट्रेडिंग. ठीक है, ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, कमर्शियल इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल या प्रोफेशनल बिजनेसेस, एंड इंक्लूड्स ऑल्सो डायरेक्टरशिप ऑफ सच कंपनी. यार आप डायरेक्टरशिप में जाते हैं ऑफ सच कंपनी, ठीक है, ऑफ सच फर्म, इनमें आप जा सकते हैं एक तरीके से. इनको सबको आपको यहाँ पर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट बोलेगा. सेटिंग अ प्रैक्टिस ईदर इंडिपेंडेंटली और एज अ पार्टनर ऑफ फर्म, एज एडवाइजर और कंसल्टेंट इन मैटर्स रिस्पेक्टिव. ठीक है, सेटिंग अ प्रैक्टिस, आपको कोई प्रैक्टिस सेटिंग अ प्रैक्टिस either independently or as a partner of firm, as advisor or consultant in matters in respect of which the pensioner has no professional qualification. अगर मान लीजिए कि आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ऐसा सेटिंग प्रैक्टिस करते हैं, आप इंडिपेंडेंटली करते हैं या फिर एज ए पार्टनर करते हैं ऑफ अ फर्म एडवाइजर इन पेंशनर, अगर आपके पास उस चीज़ से इफ़ यू हैव नो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस in the matters in the respect of his practice to be set up or carried on a relatable to his official knowledge. ठीक है, नॉलेज और एक्सपीरियंस. क्या कहता है, सेटिंग अ प्रैक्टिस इधर इंडिपेंडेंटली, या तो आप इंडिपेंडेंटली करें या फिर खुद से आप इस तरह से प्रैक्टिस कोई सेटअप करते हैं जिसमें आप इंडिपेंडेंटली या तो करते हैं, और एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म एज एडवाइज़र, वहाँ पर आप क्या लगते हैं, एज एडवाइज़र लगते हैं वहाँ पर. ठीक है, एज एडवाइज़र और कंसल्टेंट इन मैटर रिस्पेक्ट टू विच द पेंशनर हैज़ नो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड द मैटर्स in respect of which the practice is to be set up or carried out on relatable to his official knowledge or experience. दूसरा बोलता है तो ये भी आपका मतलब कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में ही आ रहा है. ठीक है, तो बोलता है हैज़ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. अगर मान लीजिए आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, बट द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच प्रैक्टिस इज टू बी सेट अप आर सच एज आर likely to give his clients an unfair advantage likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official dealings positions. ठीक है, हैज़ टू अंडरटेक वर्क इन्वॉल्विंग लाइजनिंग, जो है वर्क इन्वॉल्विंग लाइजनिंग और कॉन्टैक्ट विद द ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये सेटिंग अ प्रैक्टिस इधर इंडिपेंडेंटली. तो ये क्या बोलना चाह रहे थे एक्सप्रेशन, अच्छा इसको भी आप कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट मानते हैं. ठीक है, कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी अगर आप ऐसा कोई भी काम करें तो इसको कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट मानते हैं. दूसरा बोलता है बी,
The expression date of retirement in relation to government servant re-employed after retirement without any break, either in the same or in Group A post under the government or any other equivalent post under a state government, means the date on which such government servant finally ceases to be so re-employed in government servant. मतलब होता है expression date of retirement क्या बोलता है in relation to government servant re-employment. The expression date of retirement की बात कर रहे हैं अभी. डेट ऑफ रिटायरमेंट का मतलब क्या है इन रिलेशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट री एम्प्लॉयड, जो कि री एम्प्लॉयमेंट होता है आफ्टर रिटायरमेंट. ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक, इधर इन जो भी री एम्प्लॉयमेंट होता है आफ्टर रिटायरमेंट विदाउट एनी ब्रेक. ठीक है, इधर इन द सेम और इन द ग्रुप ए पोस्ट अंडर और इन गवर्नमेंट विद सच री एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस, तो आप बोल देंगे डेट ऑफ रिटायरमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सर्वेंट विदाउट एनी ब्रेक. ठीक है, इधर इन द फॉर्म ऑफ अनदर ग्रुप ए पोस्ट. ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट or in any other equivalent post under a state government, means the date of which the government finally ceases to be employed in government service. ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं हम आपका नेक्स्ट नंबर का, एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट अंडर अंडर अ गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया. चलो अभी ये तो यहाँ की बात रही है, क्या आप आउटसाइड इंडिया ले सकते हैं क्या, इसके लिए बारे में बात कर लेते हैं. तो कहता है इफ अ पेंशनर हु इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट वाज अ मेंबर ऑफ ग्रुप ए सर्विसेज. ठीक है, फॉर हिज रिटायरमेंट जो है अगर वो ग्रुप ए सर्विस सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए से अगर वो उनका है, विशिष्ट सेंट्रल सर्विसेज जो है ग्रुप ए सर्विसेज बिफोर हिज रिटायरमेंट जो है विशेष टू एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर एनी गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, he shall obtain previous permission. आपको permission for such action and no pension shall be payable to pensioner who accepts an employment without proper. सर आप वो कह रहे हैं इसके अलावा पेंशन जो है no pension shall be payable to a pensioner who accepts such an employment without proper permission of any period for which he is so employed or such longer period as the government may direct. ठीक है, provided that a government servant who was permitted by the central government to take up a particular form of employment under any government outside India during his leave military shall not be required to obtain subsequent. मान लीजिए उसको provide that a government जो है servant जो है who was permitted by the central government to take up any particular form of employment outside India outside India during his military, the government shall not be required. उस केस में जो है shall not be required to obtain subsequent permission. ठीक है, whether the request of a pensioner for permission to accept employment under government outside India shall be considered in accordance with the government of TOBR. ठीक है, that should be जो भी आपकी जो भी acceptance है ना आपकी जो परमिशन है बेसिकली इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ TOBR होना चाहिए. ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका आता है आपका थर्ड चैप्टर आ आपका क्वालिफाइंग सर्विस की. क्वालिफाइंग सर्विस से आप क्या समझते हैं. देखिए कमेंसमेंट ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस क्या क्या होता है. होता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट शेल कमेंस फ्रॉम द डेट ही टेक्स चार्ज ऑफ द पोस्ट टू विच ही इज फर्स्ट अपॉइंटेड इधर सब्सटेंटिवली और इन ऑफिशिएटिंग और टेम्पररी कैपेसिटी. देखिए सब्जेक्ट टू द प्रोविजन जो कुछ प्रोविजन दे रखे हैं उनको छोड़ के क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शेल कमेंस फ्रॉम द डेट ही टेक्स चार्ज ऑफ द पोस्ट टू विच ही इज फर्स्ट अपॉइंटेड. ठीक है, तो किससे होगा फ्रॉम द डेट ही टेक्स चार्ज द पोस्ट टू विच ही इज फर्स्ट अपॉइंटेड, जहाँ पहले हुआ है इधर सब्सटेंटिवली और इन ऑफिशिएटिंग और टेम्पररी कैपेसिटी. ठीक है, या तो सब्सटेंटिवली हो गया बाद में हो गया, या फिर और इन ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में हो गया, या फिर टेम्पररी कैपेसिटी में हो गया. ठीक है, तो जहाँ से उन्होंने पहले सर्विस ली है वो आपका कमेंसमेंट ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा. प्रोवाइडेड दैट officiating or temporary service is followed without interruption by substantive appointment in the same, और क्या होना चाहिए विदाउट इंटरप्शन होना चाहिए. प्रोवाइड दैट ऑफिशिएटिंग और टेम्पररी ऑफिस जो है ना कोई भी आपका ऑफिशिएटिंग और टेम्पररी ऑफिस इज फॉलोड विदाउट इंटरप्शन बाय substantive appointment in the same or another service or post. Provided further that service rendered before attaining the age of 18 years shall not count. Yeah, provided further that service rendered before attaining the age of shall not count except in the cases of counting military service or civil pension under rule 20. ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आपने सर्विस रेंडर्ड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स करी है अगर शैल नॉट काउंट, वो जो है काउंट नहीं होगी. ठीक है, ये तो पता ही आपको. एक्सेप्ट
काउंट नहीं होगी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मिलिट्री सर्विसेज में। ठीक है, बोलता है कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्विस क्वालिफाइज। कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्विस क्वालिफाइज क्या कहता है, द सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट क्वालिफाई अनलेस ही इज ड्यूटीज एंड पे आर रेगुलर बाय द गवर्नमेंट और अंडर कंडीशन determined by the government. The service of a government servant shall not qualify unless his duties and pay are regulated by the government. यहाँ पे सर्विस का मतलब जो कह रहे हैं, सर्विस मीन्स द अंडर द गवर्नमेंट एंड पेड बाय दैट गवर्नमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और अ लोकल फंड एडमिनिस्ट्रेटेड by that government does not include service in an establishment not having a non-contributory pension scheme, having a non-contributory pension scheme unless such service is as qualifying service by that government. ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस का मतलब बता रहा है कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्विस क्वालिफाइज। सर्विस का मतलब क्या है, तो किसी चीज़ को आप सर्विस कहते हैं कि ये क्वालिफाइड सर्विस आपकी। द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट क्वालिफाई अनलेस, ठीक है, जो सर्विस जो है ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट क्वालिफाई अनलेस हिज ड्यूटीज एंड पे आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट और अंडर कंडीशंस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, बोलते हैं फॉर दिस रूल एक्सप्रेशन, जो सर्विस का मतलब है यहाँ पे मतलब है सर्विस का मतलब service under the government and paid by that government from the consolidated fund of India, from a local fund administered by the government, but does not include नहीं करेगा, but does not include service in an establishment and not having a non contributory pension scheme। ठीक है, जिसके पास नहीं है, unless such service is transferred as qualifying service by that government। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका दैट इज यस नंबर 13 है, दैट इज सर्विस इन स्टेट गवर्नमेंट की। सर्विस जो है स्टेट गवर्नमेंट मिल सकते हैं क्या, बोलते हैं इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू अ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, हु वाज इनिशियली अपॉइंटेड इन अ पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर दिस एंड हु इज परमानेंट ट्रांसफर टू अ सर्विस और पोस्ट टू विच दीज रूल्स अप्लाई, द कंटिन्यूस सर्विस अंडर ऑफिशियल टेम्पररी capacity shall qualify provided that continuous service rendered under that government in officiating or temporary capacity shall qualify if that service is followed without interruption by substantive appointment in the state government or the central government। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए इन द केस गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू, अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, सर्वेंट जो है ही बिलोंग्स टू अ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, हु वाज इनिशियली अपॉइंटेड जो है इन पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट में हुआ, ठीक है, बिफोर दिस, ठीक है, एंड हु इज नाउ, उन्होंने क्या किया, उनको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया गया अभी उनको, हु इज परमानेंटली ट्रांसफर टू अ सर्विस और पोस्ट विच दीज रूल्स अप्लाई, जिन पर ये रूल्स जो है अप्लाई हो रहे थे। कंटिन्यूस सर्विस रेंडर्ड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी ऑफिशिएटिंग और टेम्पररी और सब्सटेंटिव कैपेसिटी शैल क्वालिफाई, तो ये क्वालिफाई करेगा किसमें, ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है आपका हु इज पोस्ट और दीज रूल्स शैल अप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है यार, कि इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंग टू, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे थे पहले इनिशियल अपॉइंट हुए बिफोर 31 दिसंबर 2033 एंड हु इज़ परमानेंटली ट्रांसफर टू अ सर्विस, जो है ट्रांसफर हो गए उस सर्विस के लिए, उस पोस्ट के लिए, टू विच दीज रूल्स अप्लाई, जहाँ पर ये जो रूल है अप्लाई करते हैं। ठीक है, द कंटिन्यूस सर्विस रेंडर्ड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इन एन ऑफिशिएटिंग और टेम्पररी और सब्सटेंटिव कैपेसिटी शेल क्वालिफाई, क्या करेगा, provided that continuous service rendered under that government in an office or temporary shall qualify if that service is followed without interruption by substantive appointment in the state government or the central government। ठीक है, ओके, दोबारा पढ़ेंगे इसको, एंड हु इज परमानेंट सर्विस पोस्ट विद द उसमें क्या होगा, रिप्लाई द कंटिन्यूस सर्विस इज रेंडर्ड अंडर शैल क्वालिफाई, गवर्नमेंट इन ऑफिसिएटिंग और टेम्पररी और सब्सटेंटिव कैपेसिटी, उन्होंने किसी भी कंडीशन में दे रखा हो, मतलब जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे थे कंटिन्यू, तो आप ऑफिस थे वहाँ पर या फिर टेम्पररी थे,
या फिर सब्सटेंटिव कैपेसिटी में थे वो क्वालिफाई करेंगे। प्रोवाइडेड दैट कंटिन्यूस सर्विस रेंडर्ड अंडर द गवर्नमेंट इन ऑफिस और टेम्पररी शैल क्वालिफाई इफ दैट सर्विस इज फॉलोड विदाउट इंटरप्शन। और जो सर्विस है ना, सर्विस जो है इज फॉलोड विदाउट इंटरप्शन बाय सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट इन द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा केस बोलता है इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू स्टेट गवर्नमेंट हु इज अपॉइंटेड विद प्रॉपर परमिशन। यहाँ पर क्या हुआ, हु इज अपॉइंटेड विद प्रॉपर परमिशन to a service or post to which these rules apply after acceptance of the resignation. Okay, after acceptance of the resignation service of the state government, the continuous service rendered under the central government in officiating or temporary in officiating temporary or substantive capacity in officiating temporary or capacity or substantive capacity shall qualify करेगा वो shall qualify subject to the condition that the service rendered under the without interruption followed without interruption by state or the central government. A government servant shall be deemed to have been appointed in the government service with proper permission if he had applied this permission. ठीक है, with previous permission होना चाहिए the state government and the order of state government, तो जो order है ना state government का, that should clearly indicates क्या, the employee is resigning to join the post government with proper permission state government. ठीक है, the liability for a pension gratuity in case is covered under sub 1 and sub rule 2 shall be borne by the central government and no recovery of proportionate pension shall be made from the state government. ठीक है, the liability for pension and gratuity in case is covered under sub rule 1 shall be borne by the central government and no recovery of proportionate pension shall be made from the state government. ठीक है, तो जो है लाइबिलिटी जो है फॉर पेंशन और ग्रेजुटी इन केसेस कवर्ड अंडर सब रूल 1 या सब रूल 2 shall be borne by the central government and no recovery of proportionate pension shall be made from the state government. ठीक है, वहाँ से कुछ भी बोर नहीं होगा। ठीक है, वहाँ से कुछ भी ये नहीं करेंगे एंड नो रिकवरी ऑफ proportionate pension shall be made from the state government. ठीक है, आगे बात करते हैं रूल नंबर 14 की बात करते हैं, दैट इज सर्विस इन ऑटोनोमस बॉडीज़ की। ऑटोनोमस बॉडीज़ में सर्विस है उसके उसको किस तरीके से आप कंसिडर करेंगे इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। ये कहता है इन द केस ऑफ अ पर्सन हु वाज इनिशियली अपॉइंटेड ऑन और बिफोर इन एन ऑटोनोमस बॉडी में रहता है। ठीक है, अंडर किसमें आपको ऑटोनोमस बॉडी में अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैविंग ए नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, यहाँ पर क्या था, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम था सिमिलर टू दीज रूल्स एंड हु इज सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड विद प्रॉपर परमिशन। लेकिन वो जो है विद प्रॉपर परमिशन जो है टू सर्विस इन पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू विच दीज रूल्स अप्लाई आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ हिज रेजिग्नेशन, acceptance of his resignation, the head of autonomous body, the service rendered under the head of autonomous body in official or temporary occupation shall qualify subject to following conditions. The appointment conditions दे रखी है, the appointment of the government servant in an official or temporary occupation followed by without interruption by substantive appointment. पहला होना चाहिए the government servant is not drawing government servant जो है is not drawing a separate pension in the said autonomous body for the service rendered in the body before acceptance of resignation. Before acceptance of resignation है the government servant is not drawing a separate pension, कोई भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, from the said autonomous body or the service rendered in that body before acceptance of resignation. ठीक है, and the pension liability is discharged for the said autonomous body by paying in lump sum. तो पेंशन की जो लाइबिलिटी है ना वहाँ से वो डिस्चार्ज हो जानी चाहिए। ठीक है, autonomous by paying the lump sum in the amount of pension or service. अगर उन्होंने लमसम पे कर दिया आपको कि भाई ठीक है लमसम में आप उन्होंने पे कर दिया आपको तो ठीक है, मतलब राइट, या फिर अमाउंट ऑफ पेंशन या फिर सर्विस ग्रेजुटी एंड रिटायरमेंट ग्रेजुटी फॉर द सर्विस रेंडर्ड कुछ भी है जो उन्होंने लमसम में पे कर दी। ठीक है, the shall be determined with reference to the communication table laid in the CCS केस कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981। ठीक है, वो उस रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन रूल्स 19, whether the condition for discharge of pension liability, whether the condition liability by an autonomous body under the state non-contributive and scheme similar to these rules shall be binding on the autonomous condition for discharge of pension liability by autonomous under the state government having a non-contributive and scheme similar to these rules shall be binding on the autonomous body in accordance with the reciprocal into the statement and with the state with the consent government. ठीक है, क्या होगा for discharge of pension liability for autonomous bodies क्या होगा, shall be binding on that autonomous body
अकॉर्डेंस विद द रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, मतलब जैसा जो है अकॉर्डेंस विद द रेसिप्रोकल अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बोला गया है यहाँ पर इसका, that is a government servant shall be deemed to have been appointed in the government servant with proper permission if he had applied for the service of post with previous permission of the trust body and the order of transfer clearly linked the employee's service rendered in public sector undertaking including national nationalized bank and financial institution before the permanent settlement shall not count as qualification for these rules, ठीक है। उसको जो है नहीं माना जाएगा। कहते हैं other servant shall be deemed to have been appointed in the government सर्विस सर्विस जो है अगर आप कोई भी रेंडर करते हैं कहाँ पर पीएसयू के अंदर या फिर इंक्लूसिव फिर नेशनल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट, तो ये क्या होगा, इट शैल नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ दीज रूल्स, ठीक है। रूल नंबर 15 पे चलते हैं, सर्विस रेंडर्ड इन टेम्पररी स्टेटस बाय कैजुअल लेबर्स का क्या सीन है। बोलता है 50% ऑफ द सर्विस रेंडर्ड इन टेम्पररी स्टेटस कैपेसिटी बाय गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज कन्फर्ड टेम्पररी स्टेटस ऑन दिस and was subsequently regularized in government service in accordance with the casual labor rules, ठीक है, notified by Ministry of Personnel, shall count as qualifying service, तो ये qualifying service होगी, shall count as qualifying service for the purpose of these rules। बोलते हैं 50% सर्विस rendered in temporary status of casual labor, 50% of the service rendered in, अगर आपने 50% of the service rendered in temporary status capacity by a government servant who was conferred temporary status on, जो अगर आपको उनको टेम्प्रेरी स्टेटस दे दिया गया है 31 दिसंबर 2003 को, और जो है सब्सिक्वेंटली जो है उनको रेगुलराइज कर दिया गया इन द गवर्नमेंट सर्विस इन अकॉर्डेंस विद द कैजुअल लेबर रूल्स, ठीक है। स्कीम नोटिफाइड, तो इसमें क्या होगा, भी कह रहा है 50% ऑफ द सर्विस रेंडर्ड इन टेम्प्रेरी स्टेटस कैपेसिटी बाय गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज कन्फर्ड टेम्प्रेरी स्टेटस ऑन दिस। 50% of the service rendered in temporary status capacity by a government servant, 50% of the service okay, rendered in temporary status capacity was conferred, okay। नेक्स्ट आता है आपका काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन प्रोबेशन, द सर्विस ऑन प्रोबेशन अगेंस्ट अ पोस्ट इफ फॉलोड बाय कंफर्मेशन द सेम और अनदर पोस्ट शैल क्वालिफाई। कहता है काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन प्रोबेशन, आप प्रोबेशन पर है तो वो काउंट होगी आपकी, काउंट द सर्विस ऑन प्रोबेशन अगेंस्ट अ पोस्ट इफ फॉलोड बाय कंफर्मेशन द सेम और अनदर पोस्ट शैल क्वालिफाई। कहता है सर्विस ऑन प्रोबेशन अगेंस्ट अ पोस्ट इफ, इस कंडीशन में अगर वो फॉलो किया दिया इफ फॉलोड बाय कंफर्मेशन इन द सेम और अनदर पोस्ट, तो ये क्वालिफाई मानी जाएगी। काउंटिंग ऑफ सर्विस एज एज अप्रेंटिस, service as an apprentice shall not qualify except in case of a subordinate account service apprentice in the audit। तो सिर्फ एक केस में नहीं होगी, except in the case of subordinate account service apprentice in the audit and account department or the defense account department, इसमें मानी जाएगी, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई नहीं होगी, नॉट क्वालिफाई नहीं होगी, ठीक है। और 18 बोलता है काउंटिंग सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन हु इज engaged by a government servant, ठीक है, upon on this on or before this on same or temporary without interruption, okay, काउंट होगी। Person who in accordance with the option exercised under the refunded to the government and the government contribution contribute including constitution on the period of service that qualifying, okay। फिर मान लीजिए कोई भी पर्सन जो है काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, लेकिन जो है हु वाज इनिशियली एंगेज्ड, जो कि इनिशियली एंगेज किया गया था किसमें, ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और वो सब्सिक्वेंटली जो है अपॉइंट कर लिया गया उनको ऑन और बिफोर दिस सेम अनदर पर्सन इन अ टेम्प द सेम और अनदर पोस्ट इन टेम्पररी ऑफिशियलिंग और सब्सिक्वेंट with these rules shall apply without interruption of duty. और दूसरा बोलता है इन अकॉर्डेंस विद द ऑप्शन एक्सरसाइज अंडर द ऑप्शन, तो भी आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया अंडर द रूल दिस 1972 रिफंडेड टू द गवर्नमेंट, और उन्होंने रिफंड कर दिया उसको भी, ठीक है, क्या कर दिया, रिफंडेड टू द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन in the contribution fund with interest thereon including any other compensation for that service, तो वो भी जो है उसके में काउंट हो जाएगा अगर वो वापस कर देते हैं, will count the period of service of that side contract as qualifying, okay? अगला बोलते हैं आपका रूल नंबर 19 बोलता है काउंटिंग ऑफ प्री रिटायरमेंट सिविल सर्विस एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, बोलता है काउंटिंग ऑफ प्री रिटायरमेंट सिविल केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट who having retired on compensation pads or invalid pension or compensation gratuity or invalid gratuity was appointed on before for service the post these apply, and who on such a employment re-employment or appointment according to the rule of to draw his pension refund and agree to refund the pension already drawn the value amount of retirement gratuity shall count the former qualifying service. बोलता है काउंटिंग ऑफ प्री रिटायरमेंट सिविल सर्विस इन द केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो रिटायर्ड हो गया ऑन कॉम्पनसेशन पेंशन पे, ठीक है, और इनवैलिड पेंशन पे या फिर कॉम्पनसेशन ग्रेचुटी पे या फिर इनवैलिड ग्रेचुटी पे, ठीक है? और उसको उन्होंने क्या किया, ही वॉज री एम्प्लॉयड एंड अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर को उन्होंने फिर दोबारा से री एम्प्लॉय कर लिया, ठीक है, तो सर्विस और पोस्ट और जो है दीज रूल्स अप्लाई, ठीक है। और उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया 72 में इज टू ड्रॉ एंड ही eased to draw his pension and refund and agree to refund the pension he already drawn, value received for commutation of the part of the pension, the amount of retirement gratuity including service gratuity, okay, then in that case क्या होगा, he shall count the former service as qualifying service, वो होगी। लेकिन बोलता है in accordance with the CC rules for counting past service under the relevant rule, the pension drawn prior to the date of re-employment was not required to be refunded, ठीक है, और बोलते हैं कि the pension drawn prior to the date of re-employment, the pension had drawn prior to the date of re-employment was not required to be refunded, पहली चीज, the element of pension which was ignored for fixation of his pay including the element of pension which was not taken into account for fixed pay was to be refunded by the government servant, ठीक है, कोई भी जो है एलिमेंट, कोई भी पेंशन का कोई भी एलिमेंट है विच वॉज इग्नोर्ड, जो कि इग्नोर कर दिया गया था फॉर फिक्सेशन ऑफ हिज पे, ठीक है, इंक्लूडिंग द एलिमेंट ऑफ पेंशन विच वॉज नॉट टेकन, और या फिर कुछ विच वॉज नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर पे वॉज टू बी रिफंडेड, तो आपको क्या करना है, वो आपको रिफंड करना है बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। फिर बोलता है द एलिमेंट ऑफ पेंशन इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेचुटी इंक्लूडिंग द एलिमेंट ऑफ commuted part of pension if any which was taken into account for pay was to be set off against the amount of retirement gratuity and the commuted value of pension and the balance if any to be refunded by him, ठीक है, the element of pension equivalent of gratuity including the element of commuted part of pension if any was taken into account for fixation of pay, अगर वो कर लीजिए, मैं एक कर लिया गया है, बोलता है which was taken into account for fixation of his pay, तो was to be refunded, और यहाँ पे was to be set off against the
against the amount of retirement gratuity and committed value of pension, ठीक है, was to be refunded by him. ठीक है, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ेंगे इसको. बोलता है in accordance with the Central Civil Services Pension Rules 1972 for counting past service under the relevant rule. Okay? Accordance with the Central Service Pension 1972 for counting past service. Counting past service under the pension drawn prior to date of re-employment was not required to be refunded. ठीक है, the element of pension which was ignored, जो element was ignored for fixed pay, includes the element of pension was not taken on account for refunded. Okay? Element of pension equivalent of gratuity. बोलता है the element of pension equivalent of gratuity including, पर पे की बात हो रही है, यहाँ पर ग्रेचुटी की बात हो रही है, ठीक है. यहाँ पर जो है पे की बात हो रही है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो ग्रेचुटी की बात हो रही है. इंक्लूडिंग द एलिमेंट ऑफ including the element of commuted part of pension, if any, which was taken into account for pay, set off against the amount of retirement gratuity and commuted value of pension, the balance be refunded by him. Okay? A government servant who opted for counting his former service was required to refund the gratuity received in respect of his earlier service in monthly installment not exceeding 36 in number. The first installment beginning month following the month in which he exercised this option. Such a case, the right to count free qualifying service shall not revive as the whole amount has been refunded. ठीक है, ठीक है. जिसने जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है हु ऑप्टेड फॉर काउंटिंग ऑफ हिज फॉर्मर सर्विस, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ही वाज रिक्वायर्ड टू रिफंड द ग्रेचुटी रिसीव्ड इन अर्लियर सर्विस, ठीक है, इन द मंथली इंस्टॉलमेंट. कैसे करनी है उनको, gratuity in monthly installment not exceeding 36 in number, and the first installment beginning from the month following the month in which he exercised the option. Such case, the right to count previous service जो है qualifying service shall not revive unless ये कहता है इसके अलावा the right to count previous service qualifying shall not revive unless the whole amount has been refunded, जब तक वो पूरा अमाउंट जो है रिफंड नहीं हो गया हो, ठीक है. फोर्थ नंबर है in the case of a government servant who having elected to refund the gratuity dies before the entire amount is refunded, the amount of unrefunded gratuity shall be adjusted against the death gratuity which may become payable to his family. ठीक है, बोलता है इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग इलेक्टेड टू रिफंड द ग्रेचुटी, उसको जो है इलेक्ट कर लिया गया है कि भाई आपको जो है रिफंड करने हैं ग्रेचुटी, dies before the entire amount is refunded, the amount of unrefunded gratuity shall be adjusted death gratuity which may become payable to his family. ठीक है, ये तो डेथ ग्रेचुटी में से इवन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग इलेक्टेड टू रिफंड, जिसने इलेक्ट किया ऐसा कि रिफंड द ग्रेचुटी, ठीक है, और वो ऐसे में डाइज बिफोर द एंटायर ग्रेचुटी इज रिफंडेड, उस केस में क्या करना है आपको, शेल बी, तो जो है अनरिफंडेड ग्रेचुटी शेल बी एडजस्टेड डेथ ग्रेचुटी, ठीक है, विच में बिकम पेबल टू हिज फैमिली. ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं फिफ्थ पॉइंट, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु ऑप्टेड टू कंटिन्यू टू ड्रॉ द पेंशन टू रिटेन द ग्रेचुटी सैंक्शन ऑफ फॉर हिज अर्लियर सर्विस, who opted to continue the draw the pension or retain the gratuity sanction for early whose case his former service was not to be counted as qualifying the pension or gratuity for his subsequent service subject to the limitation that service gratuity or the capital value of the pension and retirement gratuity, if any, shall not be greater than the difference between the value of pension and the retirement gratuity, if any, that would be admissible at the time of government final retirement. If the two period of service were combined and the value of retirement benefits already granted to him for the previous service. ठीक है, मतलब जो है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक तरीके से यही कह रहा है आपका. दैट इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु ऑप्टेड टू कंटिन्यू, जिन्होंने ऑप्ट किया, हु ऑप्टेड टू कंटिन्यू द ड्रॉ दी पेंशन, ठीक है, और रिटेन द ग्रेचुटी, ठीक है, सैंक्शन फॉर फ्रॉम हिज अर्लियर सर्विस, जो उसको मिली हुई है, ठीक है, सैंक्शन फॉर हिज अर्लियर सर्विस, एंड हु इन हुज केस हिज फॉर्मर सर्विस वाज नॉट टू बी काउंटेड, मतलब एक तरह से उसमें क्या करेंगे हम इसकी, हुज केस जो है फॉर्मर सर्विस वाज नॉट टू बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग the pension or gratuity in for a subsequent period subject to the, तो क्या होगा, that will be subject to the limitation that service gratuity or the capital value of the pension जो है and the retirement gratuity, ठीक है, if any shall not be greater
then the difference between the value of the pension and retirement gratuity, if any, that would be admission at the time of government servant final retirement if the two period of service if the two periods of service are combined and the value of retirement benefits already granted to him for the previous service. ठीक है, यहाँ पर एक्शन बोला the capital value of pension shall be calculated in accordance with the table prescribed by these rules from time to time. Counting of military service rendered before civil employment, a government servant जो है who after having rendered military service for his post, ठीक है, on or before this and who on such re-employment in accordance with certain option exercised in the pension rules cease to draw his pension and agree to refund the old pension drawn shall count previous military service qualifying service. ठीक है, हाँ, बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं आपके रूल नंबर 20 कहता है काउंटिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस किस केस में होगा, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है हु आप हैविंग रेंडर्ड मिलिट्री सर्विस, जिन्होंने मिलिट्री सर्विस दिया, ठीक है, वॉज री एम्प्लॉयड इन ए सिविल सर्विस ऑन और बिफोर December 3 से पहले आगे लग गए हो, ठीक है, who on such re-employment in accordance with an option in the CC pension rules and cease to draw his pension and refunded to agree to refund, जिन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया इन्होंने भाई ये पेंशन रूल्स वाला, ही सीज टू, अगर जैसे ही वो करेंगे तो ही विल सीज टू ड्रॉ हिज पेंशन एंड रिफंडेड और अग्री टू रिफंड, तो अगर वो अग्री करेंगे तो किसमें, ये पेंशन ऑलरेडी ड्रॉ उन्होंने जो कर ली है उसको द वैल्यू रिसीव्ड फॉर द कम्यूटेशन ऑफ और पार्ट ऑफ अ मिलिट्री पेंशन अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुटी इंक्लूड सर्विस ग्रेचुटी इफ एनी, ठीक है, नहीं आया समझ में ये, हाँ बोलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट हु आफ्टर हैविंग रेंडर्ड मिलिट्री सर्विस वाज री-एम्प्लॉयड, तो उनको री-एम्प्लॉयमेंट किया गया है इन अ सिविल सर्विस और पोस्ट ऑन बिफोर 31 दिसंबर हु ऑन सच अकॉर्डिंग विद ऑप्शन एक्सरसाइज किया जिन्होंने ये वाला विल सीज टू ड्रॉ cease to draw his pension and refunded or agree to refund the pension already drawn, ठीक है, the value received for the commutation of a part of military pension, ठीक है, the amount of retirement gratuity including service gratuity if any, ठीक है, अगर ये कर लेगा तो ही then in that case जो है shall count previous military service as qualifying service हो जाए, ठीक है, explanation दे रखा है यहीं पर इन्होंने that in accordance with the civil pension and the for counting past military service and the pension drawn prior to the date of reemployment was not required to be refunded, ठीक है, कह रहा है इसके अंदर क्या है, द पेंशन ऑलरेडी ड्रॉन is to draw his pension and refund or agree to refund the pension, बट यहाँ पर जो पेंशन जो है ना ड्रॉन प्रायर टू द डेट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड, पहली चीज जो ले ली वो ले ली, द एलिमेंट ऑफ पेंशन विच वॉज इग्नोर्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ हिज पे इंक्लूडिंग द एलिमेंट ऑफ पेंशन विच वॉज नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड, एलिमेंट ऑफ पेंशन विच वॉज इग्नोर्ड फॉर फिक्सेशन पे, वो इग्नोर कर लिया गया था ना उस टाइम पे, जिस टाइम पे एलिमेंट ऑफ पेंशन जो है, तो हाँ उन्होंने तो ऑप्ट ही नहीं किया था, लेकिन अब जब इन्होंने यहाँ पर 1972 वाला जो है ऑप्ट कर लिया है, केस में कह रहे हैं द एलिमेंट ऑफ पेंशन, the element of pension which was ignored for fixed pay, including the interest of including the element of pension which was not taken into account for fixed pay on reemployment was not required to be refunded, okay, by him, ठीक है, the element of pension equivalent or gratuity including the element of commuted part of pension if any which was taken into account of fixed pay was required to be set off against the amount of retirement gratuity, the element of pension equivalent of gratuity, तो कोई भी जो एलिमेंट ऑफ पेंशन जो है इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेचुटी इंक्लूडिंग एलिमेंट ऑफ commuted part of a pension if any which was taken into account कर लिया और fixed pay was required to be set off करना है against the amount of retirement gratuity and the commuted value of pension, ठीक है, value of pension the balance if any was required to be refunded by him, ठीक है, the government servant who had rendered military service and who on re-employment in a civil service or post on before 37 had opted in accordance with 19 to continue to draw the military pension or retain a gratuity receipt or discharge to military service. His former military service shall not count as qualifying service, वो तो काउंट नहीं होगा, his former जो है military service count as qualifying service, but under military service and who on re-employment service
had opted in accordance with the rule of the 1970 to continue to draw in accordance with the rule of the 19 continue to draw the military pension or retain gratuity received on discharge from military service for not count as qualifying service काउंट नहीं होगी इसमें ये बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड रेंडर्ड मिलिट्री सर्विस जिन्होंने जो है मिलिट्री सर्विस दे दी है अपनी सर्विस आफ्टर जॉइनिंग दैट सर्विस आफ्टर दिस shall on re-employment service post continue to draw the military service अगर वो कंटिन्यू करते हैं अपनी ठीक है वो कंटिन्यू टू ड्रॉ द मिलिट्री सर्विस और रिटर्न ग्रेचुटी रिसीव्ड ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम द he shall be covered by the इसमें वो काउंट हो जाएंगे ठीक है फिर इसके बाद बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड एक्सरसाइज द ऑप्शन रेफर टू रूल 1 वाज रिक्वायर्ड टू रिफंड क्या करना उनको रिफंड करना पड़ेगा पेंशन बोनस और ग्रेचुटी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज अर्ली मिलिट्री सर्विस इन इंस्टॉलमेंट नॉट एक्सीडिंग ये आपका मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट नॉट एक्सीडिंग 36 इन नंबर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है बिगिनिंग हो जाएंगी फ्रॉम द मंथ फॉलोइंग दी इन विच ही हैज़ एक्सरसाइज द ऑप्शन ठीक है द राइट टू काउंट previous service qualification shall not revive unless the whole amount has been refunded. In the case of a government servant who, having elected or to refund the service of bonus gratuity dies, अगर मान लीजिए वो मर जाते हैं before the entire is refunded दिए तो unrefunded जो amount of pension or gratuity जो है shall be adjusted against the death gratuity which has become payable to his family. बोलता है where an order was passed under the CCS pension rules CCS pension rules 19 allowing previous military to count कोई भी अगर एक ऑर्डर ऐसा पास होता है ऑर्डर वॉज पास जिसमें जो है अलाउिंग प्रीवियस मिलिट्री सर्विस टू काउंट एज पार्ट ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस द ऑर्डर शिल बी डीम्ड टू बी इंक्लूड द कंडोनेशन ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस ये क्या है वो डीम्ड माना जाएगा ये ऑर्डर ना इट शिल बी डीम्ड टू इंक्लूड द कंडोनेशन ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस इफ एनी इन द मिलिट्री सर्विस एंड बिटवीन द मिलिट्री एंड सिविल सर्विसेज ठीक है The pension and gratuity of the service rendered after re-employment in service or post shall not be subject to any limitation with reference to pension and gratuity drawn by the government in respect of military service. The pension or gratuity जो है for the service rendered after re-employment in civil service or post shall not be subject to जो pension और gratuity for the service rendered after re-employment in civil service और post जो है shall not be subject to any limitations ठीक है with reference to pension and gratuity with reference to pension and gratuity drawn by the government service in respect of military service ठीक है कोई कंडीशंस नहीं लगानी है आपने कह रहे हैं ठीक है नेक्स्ट बोलते हैं आपका देखिएगा ये हमारा चैप्टर है ये आ जाए तो 32 तक है इसके अंदर क्या कर सकते हैं इसको चलिए देख लेते हैं इनको भी ट्राई करते हैं जितना हो सकता है उतना जल्दी थोड़ा सा पढ़ने का इस चीज़ के बारे में ओके ज़्यादा बड़ा नहीं आई थिंक वी कैन डू इट लेट्स डू इट तो बोलते हैं आपका नेक्स्ट बोलता है आपका काउंटिंग ऑफ पीरियड स्पेंट ऑन लीव ठीक है जी all leave during service for which leave salary is payable and all extraordinary leave granted on medical certificate shall count as qualifying service ठीक है all leave कहता है जितनी भी लीव आपने ली है during the service for which leave salary is payable and all extraordinary leave granted on medical certificate shall be count as qualifying service जो है qualifying service count होगा तो all leave during service for which leave salary is payable ठीक है और all extraordinary leave granted on medical certificate shall count as qualifying service वो count होगा ठीक है provided that in the case of extraordinary leave other than extraordinary leave granted on medical the appointing authority ठीक है होता है leave other than extraordinary leave granted on medical certificate ठीक है the appointing authority made the time of granting such leave allow the person ठीक है जो भी appointing authority है that may allow the period of that leave count as qualifying service if such a leave is granted to a government servant due to his inability to join or rejoin duty on account of civil commotion
है, और फॉर प्रोसिक्यूटिंग हायर साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टडीज, दोनों केस में वो जो है उनको अलाउ कर सकते हैं। जो आपकी जो अथॉरिटी उनके पास पावर है, दो कंडीशन दिया गया है कि कमोशन की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सके थे, या फिर प्रोसिक्यूटिंग हायर साइंटिफिक और टेक्निकल स्टडीज के अंदर, ठीक है। केस ऑफ एक्सटर्नल लीव अदर देन एक्सटर्नल लीव ग्रांटेड ऑन मेडिकल एंड एक्सटर्नल लीव allowed to be counted as qualifying service and proceed to the school at the time of grant of such leave, a definite entry shall be made. क्या होता है? A definite entry shall be made in the service book of the government servant to effect that the period of external leave shall not be treated that the period of shall not be treated as qualifying service. Service book, if not made at the time of grant of external leave, can be made subsequently. ठीक है? Can be made subsequently, not made at the time of grant of external leave, can be made subsequently, but not later than. रहे, but not later than 6 months before the date of retirement. For the date of retirement of the government servant on superannuation, and if no such entry is made in the service book, the period of external leave shall be treated as qualifying service. तो मान लीजिए आपने क्या, then it will जो है shall be treated as qualifying service माना जाएगा, ठीक है। बोलता है if no such entry is made in the service book, ठीक है, तो shall be treated as qualifying service। बोलता है counting of period spent on trainings. In the case of a government servant who was required to undergo a departmental training before appointment to the post and was in receipt of pay, a scale of pay, or a stipend, or a normal allowance during such training, the period of such training shall count as qualifying service। तो एक जो है qualifying service क्या बोलता है, in the case of a government servant who was required to undergo a departmental training, ठीक है, for regular appointment to, and was in receipt of pay in a scale of pay or stipend or a nominal allowance during such training, a training जो है that is a part of this है, but to undergo कोई भी departmental training होती है before regular appointment to group C post, ठीक है, and was in receipt of pay in a scale of pay or a stipend or a nominal allowance during such training, the period of training, तो ये क्या होगा, the period of such training जो है shall count as qualifying service, ठीक है। In cases not covered under sub rule, the government may by order decide whether the time spent by the service by the government servant under training immediately before appointment to service under that government shall be counted as qualifying service। तो जो है इस केस में भी ये है, तो the government servant जो है, गवर्नमेंट जो है by order decide whether the time spent on immediately before appointment to service be counted as qualifying, ठीक है। जो जो केसेस जो है that are not cases not covered one, so government जो है may by order decide whether the time spent by a government servant under training immediately before appointment service that the government shall be counted as qualifying service। फिर बोलता है where the time spent by government servant under training immediately before appointment counted as qualifying service training or if not exceeding time permission counted as क्या आ गया आपका option, the training for appointations, okay, exceeding qualifying service count होगा, excuse me।
ऑल राइट, तो ये जो है आपकी काउंट काउंट होगा इसमें। बोलते हैं वेयर द ये बोलता है वेयर द पीरियड ऑफ इंटरप्शन इज एन एक्सेस ऑफ जर्नी टाइम ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। अगर मान लीजिए कहीं पर जो है इंटरप्शन ऑफ सर्विस जो पीरियड ऑफ इंटरप्शन जो होता है ना, इज एन एक्सेस ऑफ ज्वाइनिंग टाइम से एक्सेस है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से है, सच पीरियड ऑफ इंटरप्शन इन एक्सेस ऑफ ज्वाइनिंग टाइम शैल बी रेगुलराइज, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको रेगुलराइज किया जाएगा by grant of leave, shall be regularized by grant of leave of the kind due, or if no such leave is due, the grant of extraordinary leave by the head of the department. The period of instruction regularized by grant of extraordinary shall be counted as, then it shall be counted as qualifying service. ठीक है। 23 बोलता है काउंटिंग ऑफ पीरियड ऑफ सस्पेंशन, द टाइम पास्ड by a government servant under suspension and pending inquiry into conduct shall be counted as qualifying service। ठीक है। where no on conclusion of such inquiry is fully exonerate, अगर किसी भी केस में अगर आपको fully exonerate कर दिया, फुल्ली एक्सोनरेट कर दिया आपको, या फिर ओनली माइनर पेनल्टी दी, सस्पेंशन ओनली जस्ट अनजस्टिफाइड, तो जो है टाइम पास बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, आप अंडर रहे पास बाय प्लस क्वालिफाइंग सर्विस, प्लस क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। इन केसेस नॉट कवर्ड अंडर सब रूल 1, जो इसके अंदर नहीं आते, द पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट काउंट अनलेस अथॉरिटी कमिट पास ऑर्डर, केसेस नॉट कवर्ड अंडर सब रूल 1। ठीक है। So that the period of suspension shall not count unless the authority competent to pass order under the rule governing such cases expressly declared at the time of that it shall count, या तो फिर the period of suspension shall not count as the authority competent to pass orders under the rule governing such cases expressly declares at the time that it was uh, shall count to such extent as the competent authority. In all cases of suspension, the competent authority shall pass an order. अब इन ऑल केसेस ऑफ सस्पेंशन, ये जो है सस्पेंशन केसेस, हर एक केस के अंदर जो है notice shall pass an order specifying the extent, yes, specifying the extent to which, if any, the period of suspension shall count as qualifying service, and the definite entry shall be made in the service book of the government in this regard। ठीक है। एक डेफिनेट एंट्री जो है इसके अंदर सर्विस बुक के अंदर आपने कर देनी है। नेक्स्ट बात बोलते हैं आपका 24 बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ सर्विस ऑन डिसमिसल और रिमूवल। फॉर फीचर ऑफ सर्विस, यस, डिसमिसल और रिमूवल ऑफ द सर्वेंट फ्रॉम सर्विस और पोस्ट शैल एंटेल फॉर फीचर ऑफ हिज पास सर्विस। तो क्या हो जाएगा आपका, जो भी आपकी जो पास सर्विस है वो आपकी फॉर फीचर हो जाएगी। ठीक है। ऑन डिसमिसल और रिमूवल दिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन वी हैव काउंटिंग ऑफ पास सर्विस ऑन रीइंस्टेटमेंट। A government servant who was dismissed or removed or compulsory retired from service and is subsequently reinstated on service on appeal or review is entitled to count his service as qualifying service। ठीक है। काउंटिंग ऑफ पास सर्विस ऑन रीइंस्टेटमेंट, देखिए, a government servant who was dismissed, removed, compulsory and is subsequently reinstated on appeal entitled for that is entitled to count his as qualifying service। दूसरा बोलता है the period of interruption in service between the date of dismissal, removal or compulsion as the case may be, and the date of reinstatement, the period of suspension if any shall not count as qualifying service unless regularized by the duty of leave by a specific order of the authority which passed the order of reinstatement। The period of interruption जो है in service between the date of dismissal, removal or compulsory retirement as the case may be, and the date of reinstatement and the period of suspension if any। पीरियड ऑफ सस्पेंशन हो गया कोई भी आपका, पीरियड डेट ऑफ द पीरियड ऑफ डेट ऑफ इंटरप्शन हो गया, penny shall not count as qualifying service unless regularized as duty or leave by a specific order of the authority which passed the order of reinstatement। ठीक है। 26 बोलता है फॉर फीचर ऑफ सर्विस ऑन रेजिग्नेशन, किस तरीके से आप जो है फॉर फीचर कर सकते हैं ऑफ सर्विस ऑन रेजिग्नेशन। बोलता है रेजिग्नेशन फ्रॉम अ सर्विस और अ पोस्ट unless it is allowed to be withdrawn in the public interest by the appointing authority and forfeiture of past service। पास्ट सर्विस मतलब क्या बोलते हैं, रेजिग्नेशन, अगर कोई भी जो पर्सन है अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं फ्रॉम सर्विस or post unless it is allowed to be withdrawn in public interest by the appointing authority entails forfeiture of the past service। okay? क्या कहता है, रेजिग्नेशन फ्रॉम अ सर्विस, forfeiture of service on resignation, service or a post unless it is allowed to be withdrawn in the public interest by the appointing entails forfeiture of past service। कोई रिजाइन देके चला गया, ठीक है, तो रिजाइनेशन फ्रॉम सर्विस और पोस्ट अनलेस इट इज अलाउड टू बी विड्रॉन, as it is allowed to be withdrawn in the public interest by the else for future of past। रिजाइन कोई देके चला जाता है, रिजाइन देके चला गया भाई, ठीक है, तो रिजाइनेशन फ्रॉम अ सर्विस और पोस्ट अनलेस इट इज अलाउड टू बी विड्रॉन
इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, है तो उसको अलाउ कर दीजिए कि वो विड्रॉ कर ले पब्लिक इंटरेस्ट में, तो जो है इट एंटेल्स फॉरफीचर ऑफ पास सर्विस। अ रेजिग्नेशन शैल नॉट एंटेल फॉरफीचर ऑफ पास सर्विस इफ टू टेक अप विद प्रॉपर परमिशन, ठीक है। इट शैल नॉट एंटेल, कहता है शैल नॉट एंटेल, रेजिग्नेशन जो है शैल नॉट एंटेल फॉरफीचर ऑफ पास सर्विस इफ इट हैज बीन सबमिटेड टू टेक अप विद प्रॉपर परमिशन, ठीक है। अनदर अपॉइंटमेंट, वेदर अनदर अपॉइंटमेंट जो है वेदर टेम्पररी और परमानेंट अंडर द गवर्नमेंट वेयर सर्विस क्वालिफाइज, ठीक है। So that the order accepting the resignation should clearly indicate that the government servant has resigned the join उसमें clearly specific enter this should also be made in the head of office service book of the government servant, okay। कि रेजिग्नेशन की बात हो रही है यहाँ पर फॉर फ्यूचर ऑफ सर्विस। रेजिग्नेशन जो है फ्रॉम अ सर्विस और पोस्ट अनलेस इट इज अलाउड टू बी विड्रॉन पब्लिक एंटेल्स फॉर फ्यूचर ऑफ पास्ट, मतलब अगर पब्लिक सर्विस में आपने विड्रॉ नहीं करवाया उसको तो वो क्या माना जाएगा, फॉर फ्यूचर ऑफ पास्ट सर्विस। रेजिग्नेशन शैल नॉट एंटेल फॉर फ्यूचर ऑफ पास्ट सर्विस टू टेक अप विद प्रॉपर परमिशन, या फिर अनदर अपॉइंटमेंट, अनदर अपॉइंटमेंट वेदर टेम्पररी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट वेयर सर्विस क्वालिफाइज, तो उस केस में भी नहीं होगा। थर्ड बोलता है ऑर्डर एक्सेप्टिंग द रेजिग्नेशन, कोई भी जो ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं, द ऑर्डर जो है एक्सेप्टिंग द रेजिग्नेशन क्लियरली इंडिकेट दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज रिजाइंड टू ज्वाइन अनदर अपॉइंटमेंट, okay, with proper permission and a specific entry उसके अंदर जानी पड़ेगी, shall also be made shall also be made by the head of office in the service book, ठीक है। इंटरप्शन इन सर्विस इन केस फॉलिंग अंडर अंडर सब रूल 2, सब रूल 2 क्या है आपका, जहाँ पर आप रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है, और दूसरी जगह पर ज्वाइन करते हो। इंटरप्शन इन सर्विस इन केस ऑफ वन टू अपॉइंटमेंट बीइंग एट डिफरेंट स्टेशन नॉट एक्सीडिंग द ज्वाइन टाइम परमिशन, ठीक है, not exceeding the joint time permissible under the rules of the transfer shall be covered by grant of leave of any kind on the date of leave and by formal condonation to the extent is not covered by leave due to him, ठीक है। The appointment authority may permit to withdraw his resignation in the public interest the following conditions, ठीक है। जो भी appointing authority है may permit a person withdraw his resignation in the public interest if the resignation was tendered by government servant for some compelling reasons, अगर कोई compelling reasons थे which did not involve any reflection of his integrity and which did not involve any reflection of his integrity, efficiency or conduct, or the request for withdrawal of the resignation has been made as a result of material change in the circumstances, ठीक है, and the request for withdrawal of the resignation has been made as a result of material change in circumstances which originally compelled him to tender the resignation, that during the period of intervening between the date on which the resignation became effective and the date from which the request for withdrawal was made, the conduct of concern in no way improper, ठीक है। ये जो इंटरप्शन जो पीरियड था ना आपका, इंटरवीनिंग पीरियड था, intervening period between the date on which the resignation became effective, resignation effective हुआ जिस डेट से, and the date from which the request for withdrawal was made, ठीक है। तो उस डेट को जिस दिन रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल वाज मेड, जो कंडक्ट जो पर्सन का है इनका, the conduct of the person concerned was in no way improper, so that no period of absence from the duty between the date on which the resignation became effective and the date on which the person applies for permission to withdraw his resignation is more than 90 days, तो 90 days से होना नहीं चाहिए। जो भी जो है द पीरियड ऑफ एब्सेंस जो है फ्रॉम ड्यूटी इज नॉट मोर देन 90 डेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 90 डेज से ऊपर नहीं होना चाहिए अगर आप रिजाइन भी कर, ठीक है। दूसरा बोलता है दैट द पोस्ट विच वॉज वैकेटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन और एनी द कंपेरेबल पोस्ट इज अवेलेबल, और इसके अलावा जो है वहाँ पर जो पोस्ट जो है विच वॉज वैकेटेड, जो पोस्ट जो है विच वॉज वैकेटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन और द कंपेरेबल इज अवेलेबल, वहाँ पर अवेलेबल भी होनी चाहिए। Request for withdrawal of a resignation shall not be accepted by the appointing authority where a government servant resigns his post with the view of taking up appointment in or under a private commercial company। अगर आप मान लीजिए विद द व्यू टू टेकिंग अप अपॉइंटमेंट इन अ प्राइवेट कमर्शियल कंपनी में आप जाना चाहते हैं, तो इस केस में जो है विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, और इन अंडर कॉर्पोरेशन या फिर किसी कॉर्पोरेशन में जाना चाहते हैं, किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो होली और सब्सटेंशियली ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, अच्छा कोई भी ऐसी कंपनी जो कि दैट इज होली substantially owned or controlled by the government servant or in a body controlled or financed by government, किसी में जाना चाहते हैं तो उस केस में भी नहीं आएगा, आपका रेजिग्नेशन नहीं लिया जाएगा, मतलब विड्रॉ नहीं होगा, ठीक है।
तो बोलता है व्हेन एन ऑर्डर इज पास बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जब भी कोई भी एक ऑर्डर जब पास किया जाता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलाउइंग ऑर्डर इज अलाउइंग अ पर्सन टू विड्रॉ एंड टू रिज्यूम द ऑर्डर शैल बी कॉन्डोनेशन। कोई भी अगर ऐसा ऑर्डर पास किया जाएगा तो जो है ऑर्डर जो है ना, it shall be deemed to include the condonation of interruption in service, but the interruption shall not count, but the period of interruption shall not count as qualifying service। रेजिग्नेशन के केस में सस्पेंशन माना जाएगा इसमें, ठीक है, या फिर ट्रेनिंग में या फिर स्पेंट ऑन लीव। तो लेकिन यहाँ पे इसमें पीरियड ऑफ इंटरप्शन शैल नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर द पीरियड ऑफ इंटरप्शन जो है शैल नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस। Order is passed by the appointing authority allowing the person to withdraw the order shall be include the interruption, हो जाएगा, कंट्रोल तो कर देंगे उसको आप, but the period of interruption shall not count as qualifying service। Resignation के arrange submitted by for the purpose of passage under the government, कह रहा है रूल रेजिग्नेशन सबमिटेड अंडर फॉर द पर्पज ऑफ रूल 35 और 36। तो उनको जो ग्रेचुटी वाला जो होगा ना शायद पास हो रही हो, पेंशन ऑन ऑब्जॉर्प्शन स्टेट गवर्नमेंट और पेंशन ऑन ऑब्जॉर्प्शन। जी ठीक है, आगे चलते हैं आपका नेक्स्ट है 27 नंबर पे चलते हैं हम आपका, दैट इज इफेक्ट ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस। एन इंटरप्शन इन सर्विस गवर्नमेंट एंटेल्स फॉरफीचर ऑफ पास एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, मतलब तो यही होता है, बट बोलते हैं एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। फॉरफीचर ही माना जाता है देखा जाए तो, है ना, फॉलोइंग केसेस जहाँ पर ऑथराइज लीव ऑफ एब्सेंस है, यहाँ पर ऑथराइज लीव ऑफ एब्सेंस है, वहाँ पर कुछ कोई इंटरप्शन नहीं होगा। अनऑथराइज एब्सेंस इन कंडीशन ऑफ ऑथराइज लीव so long as the post of absent is not filled is absent। और भी अनऑथराइज एब्सेंस है इन कंटिन्यूशन ऑफ ऑथराइज लीव leave of absence so long as the post of absentee not filled substantively interruption। बोलता है कोई भी अनऑथराइज एब्सेंस है इन कंडीशन ऑफ ऑथराइज लीव, तो देख लेते हैं एक बार क्या होगा। दैट इज एन इंटरप्शन इन द सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंटेल्स फॉरफीचर ऑफ हिज पास सर्विस, यस, ठीक है, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, जहाँ पर ऑथराइज जो लीव है लीव ऑफ एब्सेंस हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, अनऑथराइज एब्सेंस इन कंटिन्यूशन ऑफ एब्सेंस है इन कंटिन्यूशन ऑफ ऑथराइज लीव ऑफ एब्सेंस, ठीक है, so long as the post of absentee is not filled substantively, ठीक है, suspension where it is immediately followed by reinstatement, जो है where it is immediately followed by reinstatement whether in the same or different post where the government servant dies or is permitted to retire or is retired or in the while under suspension। तो जब ये इसको भी जो है आप सस्पेंशन नहीं मानेंगे, मतलब जो इंटरप्शन नहीं मानेंगे, यहाँ पर सस्पेंशन हो गया है where it is immediately followed और immediately जो है that is immediately followed by reinstatement within the same or different post or where the government servant dies, the government servant dies or is permitted to retire or is retired while under suspension, तो ये भी इंटरप्शन नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस in an establishment under the control of the government if such transfer has been ordered by a competent authority in the public interest, okay,
whether transfer of non-qualifying service in solution to the control of the government if such transfer has been ordered by a government in public interest. The transfer of non-qualifying service in establishment under the control of the government if such transfer has been ordered by a competent authority in the public interest. Joint time violent transfer from one person to another. ये कहता है transfer to non-qualifying establishment under the control of the government if such has been ordered by a competent authority in the pending and on the government upon authority may by order commute the period of without leave without वो उसको commute भी कर सकते हैं. अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है मे बाय ऑर्डर कम्यूट कर सकती है नेक्स्ट राउंड. ये ट्रांसफर ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ इन एस्टेब्लिशमेंट बाय नॉन क्वालिफाइंग. नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका कॉन्डोनेशन ऑफ इंटरप्शन इन सर्विसेज. ये पेंशन से कम और सर्विस रूल्स ज़्यादा लग रहे हैं एक तरीके से ना. क्वालिफाइंग सर्विस जो हम देख रहे हैं पेंशन रूल्स कम लग रहे हैं हमें. क्वालिफाइंग सर्विसेज तरीके से जो है बाद में हमारा जो फोर्थ पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेंशन गवर्निंग देयर ग्रांट फोर्थ फिफ्थ पार्ट. फिर आपका जो है रेगुलेशन एंड पेंशन ग्रेचुटी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पार्ट आए थे आपका. फिर फैमिली पेंशन भी है, फेयरनेस रिलीफ. बस यही है कि एक बार बता दिया जाए इनके बारे में. ठीक है, ये बात करते हैं हम कॉन्डोनेशन ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस. बोलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ specific indication to the contrary in the service book, an interruption between two spells of civil service to the government. ओके, बोलता है कॉन्डोनेशन ऑफ इंटरप्शन इन सर्विसेज की किस तरीके से आप जो इंटरप्शन सर्विस उसको कॉन्डोन कर सकते हो, माफ कर सकते हो. बोलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक इंडिकेशन टू द कॉन्ट्ररी इन द सर्विस बुक, an interruption between two spells of civil service and rendered by a government servant under government including civil services rendered and paid out of defense services estimates or railway estimates shall be treated as automatically condoned and the pre-interruption service treated as qualifying service. कहता है in the absence of a specific indication, okay, to the contrary in the services book, an interruption between two spells of civil service rendered by government under government including civil service rendered and paid out of defense services. अच्छा, इंक्लूडिंग क्या कर रहे हैं, इंक्लूडिंग civil service rendered and paid out of defense estimates और railway estimates जो है that shall be treated as automatically condoned and the pre-interruption service as qualifying service. अगर आपने कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं दी है सर्विस बुक के अंदर तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है, नथिंग इन सप्लीमेंट शैल अप्लाई टू इंटरप्शन कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन. लेकिन जो है अगर ये जो ऊपर वाला रूल है shall apply to interruption caused by resignation, dismissal or removal from service or in participation strike. अगर इन बेसिस पर आपका वो हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई वो नहीं है. then nothing shall apply to interruption caused by resignation, dismissal or removal from participation strike. The period of interruption referred है बोलता है द पीरियड ऑफ, अगर आपका वो कहता है कि एक तरीके से रेजिग्नेशन डिसमिस रिमूवल होता है सर्विस बुक के अंदर हो या नहीं हो. ठीक है, वो आपका वही माना जाएगा. दूसरा बोलता है द पीरियड ऑफ इंटरप्शन रेफर्ड इन रूल शैल नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस. लेकिन जो वो है तो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाएगा. ठीक है, the appointing authority जो है may consider condonation of interruption in service and to treat pre-interruption service as qualifying service. कोई भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी may considering condonation of interruption in service and to treat the pre-interruption service as qualifying service वो कर सकती है. अपॉइंटिंग अथॉरिटी है may consider condonation this and to treat
प्री इंटरप्शन सर्विस एज क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है। Whether the appointing authority may take a decision whether said decision not to condone interruption service only in exceptional and grave circumstances करते हैं, only in grave and exceptional circumstances के अंदर may take a decision not to condone this service only in exceptional and grave circumstances, otherwise माफ कर देना है। बोलता है no such grant, no such order against condonation or interruption in service shall be passed by appointing authority without extending to the government servant a reasonable opportunity. No such order against condonation or interruption service be passed without extending a reasonable opportunity of a representation, ठीक है। फिर बात करता है आपका डेपुटेशन की, बात करते हैं डेपुटेशन टू यूनाइटेड नेशन अदर a government servant who is deputed on foreign service or United Nations fund may opt to pay the pension contribution in respect of his foreign service and count such service as qualifying for pension, okay। तो क्या कर सकते हैं आपका, कोई भी अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जहाँ पर फॉरेन सर्विस पे चला गया, जैसे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी चले गए या फिर IMF चले गए, ठीक है, या फिर एशियन बैंक डेवलपमेंट बैंक चले गए, तो क्या है, ही में ऑप्ट, क्या क्या ऑप्ट कर सकते हैं वो, to pay the pension contribution in respect of his foreign service and count such service as qualifying service for pension under these rules, not to pay the pension contribution in respect of his foreign service and not count such service as qualifying for pensions, provided that where a government servant opts to clause B, यहाँ पर वो नोट टू पे कर रहे हैं, the penny paid by the government shall be refunded to him, ठीक है। pension contribution if any paid by government servant shall be refunded to him. The provide that where a government servant opts for clause B अगर penny paid by shall be the pension. नेक्स्ट आपके बात करते हैं रूल नंबर 30, बोलता है पीरियडिक वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ऑन ईच ओकेजन आफ्टर for the date of verify डिटरमाइन करेंगे केस के अंदर डिटरमाइन क्वालिफाइंग, दो केस बताया है, क्या क्या केस बताया है, ऑन ईच गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ पर जो है ऑन ईच ओकेजन बोल रहा है, 2 ओकेजन बताया इन्होंने, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है, ऑन बीइंग और ऑन हिज बीइंग लेफ्ट विद 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। हेड ऑफ ऑफिस जो है आपके, जो भी आपके हेड ऑफ ऑफिस इन कंसल्टेशन अकाउंट ऑफिसर्स अकॉर्डिंग विद द रूल्स एंड टाइमिंग इन्फोर्स वेरीफाई, क्या करेंगे वो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई द सर्विस rendered find the qualifying service and communicate to him, ठीक है। For the purpose of verification of service, the head of office shall follow the procedure prescribed in this. Not within anything where a government servant is transferred to another department from a temporary department on account of closure of department he had been previously serving because he had not been declared surplus. The verification of service may be done whenever such a verification जो है of service be done whenever such event occurs. Also note within anything where government servant is transferred, यहाँ पर जो कोई भी government servant है is transferred to another department, a temporary department, or from a temporary department or on account of closure of the department, yeah, or because the post had become surplus, the verification of service may be done whenever such an event occurs. The verification done under this rule shall be treated as final. Under this rule, final and shall not be reopened except when necessitated by a subsequent rules and orders. तो क्या है जो वेरिफिकेशन जो आपने अब जो वेरिफिकेशन करी ना इस टाइम पर, the verification done under this rule shall be treated as final, ठीक है, and shall not be reopened except when necessitated by subsequent changes in the rules and orders governing condition under which the term of pension. By 31st January of each year, report shall be submitted to secretary giving the person who is required to be issued a certificate of qualifying service during the previous
here of government who have actually been issued the certificate during the certificate and okay वो जैसे बता देना आपने. Alright, with this हमारा जो chapter number 3 है that is completed. But with this, thank you so much and have a great day. And in the next video, we will be completing our next chapters. Thank you so much.